Good morning, students. Today we will learn about basic HTML tags and structure of a HTML program. So today we will write our first HTML program. What are the basic HTML tag? That means minimum number of tag we need to create a HTML page. तामाने कहला हमें मिनिमम कितना टैग दरकार है गोटे HTML पेज को तैयारी करिया पई बा गोटे छोटिया HTML प्रोग्राम रन करिया पई. So first HTML is a tag based language. That means HTML का आपने तैयारी थी खाली टैग मानकर कलेक्शन नहीं तैयारी कराई थी. Next, what is a tag? Tag is an element which instructs the web browser what to show and how to show. ता माने कौन आप पर जिते बड़े मु एलिमेंट कही माने बाय डिफॉल्ट भाभी नो जेटा कोन आइतो टैग टैग आ एलिमेंट दीटा को सिनोनिमस. टैग रो काम कोन होला वेब ब्राउजर स्क्रीन रे कोन देखिबो आ कोड केमिति देखिबो ए दीटा कार काम होला टैग रो काम होला. सो टैग इज ए इंस्ट्रक्टर फॉर द वेब ब्राउजर. Next point is tag gives a specific instruction in angle bracket. That means every tag should be in angle bracket or within angle bracket. और angle bracket भीतर कौन रहिबो tag टा रहिबो. Tag कितने प्रकार? Again tag are two type. One is pair tag, another is unpair tag. Later discuss about pair tag. A pair tag has two set of command. One is starting, another is ending. That means the first tag of the pair is called the opening tag and the last tag is called the closing tag or end tag. तमने pair tag कोन हो दीटा tag गुने तैयारी कराई छी. गोटे रहबो opening tag आउट कोन रहबो closing tag और end tag. द एग्जांपल कोन होला मने को सपोज h1 लाडा tag तार pair tag टा कोन हो /h1 tag tar खाई कोथरो एंगल ब्रैकेट रो खाई छी. आर भीतर दीटा tag भीतर हम जा कमांड लिखिबी से इंस्टॉल करिवो कोन वेब ब्राउजर को h1 काम जा से करबो. ये सब आम कौन करिया परे परे देखिबा जो कॉमन टैग पढिबी तो h1 काम कोन h2 काम कोन पढिबा. सेकंड टाइप ऑफ टैग इज सिंगुलर टैग. इट इज आल्सो नोन एज स्टैंड अलोन टैग और अनपेयर टैग. दैट मींस इटा कोन गोटे मात्र टैग. इट हैज नो क्लोजिंग टैग. एग्जांपल कोन br रे परिबो hr रे पर लॉट्स ऑफ टैग आर अनपेयर टैग. बट 90% ऑफ टैग्स आर पेयर टैग. हम जते टैग पढिबा 90% टैग होची कोन pair tag. That means तार starting tag रहइबो आउट कोन रहइबो end tag रहइबो. Standard HTML tag. That means minimum केतरा tag को नै गोटे कोन करि परिबा गोटे HTML प्रोग्राम बनै परिबा. Every HTML page should contain 4 standard HTML tag. They are HTML/HTML, head/HTML/head, title/title, body/body. It is opening tag, it is closing tag. Similarly, head it is opening tag, it is closing tag, it is opening tag, closing tag. Next, we will discuss about HTML tag, head tag, title tag, and body tag. We will start with HTML tag. Starting tag is HTML tag. Every HTML program must start with a HTML tag and must end with a /HTML tag. ता माने कोन होला प्रति HTML प्रोग्राम स्टार्टिंग अप को उतरु HTML टैग रो आ सरीबो को उतरे /HTML टैग रे. दैट मींस प्रोग्राम रो सब जगह मु का भीतर रखिबी HTML और /HTML टैग भीतर. द HTML टैग टेल द ब्राउजर दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट. HTML टैग रो काम कोन होला से ब्राउजर को कहबो इटा गोटे की डॉक्यूमेंट गोटे HTML डॉक्यूमेंट. कहीं हम बड़ बड़ प्रोजेक्ट करबा वेब डिजाइनिंग करबा से बहुत सारा लैंग्वेज हम यूज करबा HTML, CSS, PHP, JavaScript, ASP.NET बहुत सारा लैंग्वेज यूज करा पड़े. सेते बड़े HTML टैग टा कहबो ब्राउजर कोन आप पर जो डॉक्यूमेंट आछो से की डॉक्यूमेंट गोटे HTML डॉक्यूमेंट. द HTML टैग रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. HTML टैग टा हम कोन कहूचो रूट एलिमेंट कहूचो. रूट माने रूट टैग जो जगह एलिमेंट आछो से जगह भाबे कोन से टैग. द HTML टैग इज द कंटेनर ऑफ ऑल अदर HTML elements. That means tag except doc type tag. Doc type tag टा कोन टिके परे कहबी. doc type tag रे एक्जेक्टली काम कोन ई doc type tag छड़िया सब जगह टैग का भीतर रहबो HTML और /HTML भीतर. Next tag is head tag. This tag contain metadata.
मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा, ये डाटा नुह, ये डाटा विषय अलग तुम इनफर्मेशन देव। और एग्जांपल मैं पार डॉक्यूमेंट फाइल, कैरेक्टर सेट, स्टाइल, लिंक, स्क्रिप्ट ये सब मतलब एडवांस एचटीएमएल पढ़ेबी, ये सब डिटेल्स की कहबी। बर्तमान पे सब दरकार नहीं मोर, खाली आम टाइटल टैग दरकार, आउ कहार दरकार नहीं। ये स्पेसिफिक इनफॉरमेशन अबाउट द वेब पेज दैट इज नॉट डिस्प्लेड बाय द यूजर। आर कामटा कौन होला, ये टैग रे जहाँ किसी रखी से यूजर को देखेबनी, से क्या देखेब, से मत देखापी, नॉट टू द यूजर, तार सब अन्य काम अच्छी। एचटीएमएल हेड टैग भीतर कौन कौन रखिपर, स्टाइल रखिपर, स्टाइल टैग रखिपर, टाइटल टैग रखिपर, लिंक टैग रखिपर, मेटा टैग रखिपर, स्क्रिप्ट टैग रखिपर, नो स्क्रिप्ट टैग रखिपर। आमर काम रहिबो टाइटल टैग काम अच्छी। मेटा डाटा होउछि आम सर्च मारुछु, ए मेटा डाटा भीतर आम जहाँ रखिबा से सर्च इंजन काम आसिबो। नेक्स्ट आमर कौन, टाइटल टैग। This tag defines a title of an HTML document. It is located inside head section. That means head tag भितर कौन रहिबो, टाइटल टैग रहिबो। ये कौन करिबो, टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स आम रन करिबा वेब ब्राउजर रे, वेब ब्राउजर ऊपर जो नाटा लिखा हो सेटा का भितर रहिबो, टाइटल टैग भितर रहिबो। द टाइटल टैग आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वेब पेज व्हिच इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो। ब्राउजर विंडो टॉप रे कौन आसो लिखा हो, दैट मीन्स वट एवर आई एम राइटिंग इनसाइड द टाइटल टैग that will be displayed on the top of the browser. It is used for ranking of search engine. The default name for the bookmark created by the user. That means if I create a bookmark, that means title will be name of the bookmark page. The link headlines when it is shared on social media. Suppose I am sharing some link in the social media. That means whatever I am writing inside title tag, that will be by default showing the social media. It is a clickable headline. Suppose I am searching something. Suppose in Google I am searching list of Prime Minister of India. Whatever list showing in the, after searching the Prime Minister of India, whatever link it will show, that all are written inside the title tag. For example, title, DRETOR technology, learn HTML, PHP on YouTube online. That means whatever I write, this line will be displayed in the top of the browser. आर काम कौन ला, आपको आम कौन कर टाइटल भीतर एमती लिखा जहाँ छोट कि लिखा और पेज विषय से कौन कर शो कर जो ब्राउजर ऊपर देख जो आम सर्च करुचु सर्च इंजिन में जो नाटा आसो से कौन आसो जहाँ मुझे लिखता क्या भितर टाइटल टैग भितर। यहाँ मुझे पर तुम देखेबी केमती कौन आसुली। लास्ट ला बॉडी टैग। द HTML बॉडी टैग डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट of the section of the HTML document that will be directly visible on the web page. माने वेब पेज भितर जहाँ हमार कंटेंट देखा जीवो ऊपर ने वेब पेज भितर जहाँ देखा जीवो सब का भितर रहिबो बॉडी टैग भितर। दैट मीन्स जहाँ मु किछ लिखिबि सब का भितर रखिबि बॉडी टैग भितर रखिबि। दिस टैग also commonly refer as the body element. The body element contain all the content of HTML documents such as headings, paragraph, image, hyperlink, table, list, etc. etc. There can only be one body element in the HTML document. That means गोटे HTML document कितना body tag रहिबो, single body tag रहिबो. Structure of a simple HTML program. सिंपल HTML प्रोग्राम करछि ता नाम दैछि मो test.html मु जोटा तुम प्रीवियस क्लास रे प्रीवियस वीडियो रे कहितले गोटे वीडियो में जो अपलोड करथिले जो फर्स्ट HTML प्रोग्राम लिखि ता नाम कोन देबी टेस्ट रखिबी। सपोज स्टार्टिंग विथ नॉट इक्वल टू साइन देछि डॉक टाइप HTML मु जोटा कहितले HTML बाहर रहइबो। एटा कोन पे यूज करा है कमेंट पॉइंट तो सब जगह कमेंट टैग पड़िबा तो देखबा ए टैग रो काम कोन। This section belongs to the comment section which will not appear in the web page. That means this part will not appear in the web page. हम प्रोग्राम कोड आरंभ होछि HTML आरंभ होछि /HTML ले सरीछि तापर HTML पर कोन आसीबो हेड आसीबो हेड भीतर की रहइबो टाइटल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम /टाइटल मान टाइटल तो आरंभ होला एटी सरीला। सिमिलर हेड ए लाइन आरंभ होला ए लाइन कोन होला सरीला। बॉडी /बॉडी दैट मींस बॉडी भीतर हम कौन लिखले वेलकम टू द वेब डिजाइनिंग वर्ल्ड ताटा 5 स्टार रखिछि। दैट मींस ए बॉडी पार्ट ता खाली कोन करिवो मोर वेब पेज रे शो करिवो
ये जो मैं आउटपुट बाहर करी से कौन आसो मोर फाइल नाटा आसला कौन टेस्ट.html प्रोग्राम नाटा टाइटल नाटा कोटे आसला माय फर्स्ट प्रोग्राम आ बॉडी भीतरटा कोटे आसला ई जगह आसला अब ये प्रोग्रामटा मु तुम मानक देखेबी केमि लिखा हो बोली मु तुम लास्ट क्लास एमती कहते फास्ट आम कौन करवा गोटे फाइल टे खोलिबा ई फाइल नोटपैड फाइल गोटे इट इज ऑप्शनल प्रोग्राम आरंभ करे थ्रू HTML /HTML आर भीतर मोर कौन रही सबुजा प्रोग्राम रही कौन टैग अच्छे हेड to end with /z. Inside head we will write title tag. Title it should be end with /title. So this is my first whatever I will write inside the body tag, it will display on the browser. Suppose I am writing welcome to the web designing world. Last I told you how to save the file save as in desktop. I'll write what file name is. It is my first program test.html. Next I'll make all files. These three things I need to remember. This one is desktop, this will show desktop, test.html and save file as all file. So now one program appear as test icon. Suppose I will open this one, it will show welcome to the web designing world. Now look at the program closely. My file name is test.html. It is stored in the desktop. So C user project desktop, it is its path. So title will show in the top of the browser. This is my first program. It is showing this is my first program. Next one, body. This is the content of the web page. Welcome to the web designing world. It will show here. डॉक टाइप HTML टाक हम कौन कौचे ये फाइल टा HTML पड़े जोना पड़ती लिखा हो एटा ऑप्शनल कारण नॉट सिंबल जहाँ लिखा से कौन कमेंट एटा अपीयर करिवने कोथरे वेब पेज रे बॉडी भीतर जहाँ हो सेटा वेब पेज देखिबो हेड टा क्या हम कहि देले हेड आम पाई रखा हिची हेड अन्य मान पाई वेब पेज में रखा ही नहीं टाइटल भीतर हम जहाँ रखिबा से कोड शो करिवो ब्राउजर ऊपर शो करिवो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम बॉडी भीतर जहाँ रखिब से कहा देखिबो वेब पेज भीतर ए एरिया भीतर देखिबो कौन देखला वेलकम टू माय वेब डिजाइनिंग वर्ल्ड आपर हम कौन पढ़िबा नेक्स्ट क्लास में कौन पढ़िबा जहाँ सब कॉमन टैग अच्छी कारण खाली एमती लिखले तो हम ना ताको सुंदर करिया दरकार कलर करिया दरकार आपर क्लास में सब कौन नेक्स्ट क्लास में कौन देखिबा केते सुंदर करी कौन बनाई परिबो गोटा वेब पेज को बनाई परिबो आपर नेक्स्ट सेशन में कॉमन टैग पढ़िबा थैंक यू।